Dear friends, welcome to the Rural IT Quiz Program. The Department of Electronics, ITBT, Science and Technology, Government of Karnataka, in association with Tata Consultancy Services, came together in the year 2000 to create a unique initiative, the Rural IT Quiz. After its successful launch and implementation in Karnataka, the program today is conducted across 6 states of India. It has provided an impetus to a multitude of students who have been a part of this annual contest. The objective of the quiz is to enhance IT awareness among the students from smaller towns and districts across India, while providing an opportunity to learn about the many advances in the world of information technology. The program also strives to boost the confidence levels of students while providing them a platform to showcase their talents and realize their potential. Into its 21st year, the program that touched the lives of over 18 million children across the 6 states that the quiz traverses. Limca Book of Records recognizes the Rural IT Quiz as the first quiz on information technology for the students of rural India. Over the years, the Rural IT Quiz has been graced by several distinguished personalities who have served as great motivators and a constant source of inspiration, not only to the winners but also to the participating students. We would like to take this opportunity to express our appreciation to all the participating schools, the heads of institutions, and teachers for the overwhelming response we have received for the quiz this year. We hope you all have a great quizzing experience. Presenting the quiz is a dynamic quiz master, best known for his characteristic wit and tricky clues. He has presented close to 1,000 quiz shows across India, Oman, UAE, Canada, and Japan. A voracious reader, he is a management graduate from the University of Liverpool, United Kingdom. He has been associated with the Rural IT Quiz from 2004. Friends, let us welcome on stage the energetic quiz master, Lloyd Saldana. Hello and a warm welcome to TCS Rural IT Quiz 2020. Ladies and gentlemen, this is season 21, episode 4. We've finished 3 episodes and we've had 3 outstanding quizzes where the battle almost felt like a one-man race where somebody so well prepared took apart the contestants. Here too, we are today at Madhya Pradesh. Another state, another top 6, and this will be another battle to watch out for. Without further ado, let me take you through the route map of this quiz. We've already completed 3 states. We are on to the 4th, and this is what my route map looks like. We're done with Maharashtra, we're done with Rajasthan and Gujarat. 3 finalists already in their place in the national finale. Today we are at Madhya Pradesh. We move on to Chhattisgarh and then Karnataka. 3 more remaining slots. The first of the 3 will be taken here at Madhya Pradesh. Along with this slot, there's also prizes to be won. Let's take a look at what's at stake. Every participant gets a participation certificate. I hope you guys keep this very safely. I talk about this all the time, so that is about every other certificate that you get. Make sure you have a folder, make sure you keep them safe. Another thing which is very, very unique to the Rural IT Quiz is the fact that we appreciate all the effort that teachers put in
to make sure this works. Back end, they're never in front. They're always supporting their students. And thank you so much, teachers, for all your effort. And an appreciation certificate for all the teachers from the Rural IT team. Moving ahead, then, it's the turn of the students. What would they receive? All finalists get gift vouchers of 3,000 rupees and a certificate to go along with it. The state runner-up takes home a gift vouchers of 7,000 rupees and, of course, a certificate. The state winner takes home a gift voucher of 10,000 rupees, a winner's trophy, the beautiful winner's trophy there, and a certificate to go along with it. Along with being a state champion, they qualify to the national finale. We already have 3 finalists. This will be our 4th one, and they all will battle it out for a simple prize money, an educational scholarship from TCS and the government of Karnataka, an educational scholarship of 1 lakh rupees. The runners-up, the national runners-up, takes home an TCS educational scholarship of 50,000 rupees, and all the finalists, the other 4 contestants, take home an educational scholarship of 10,000 rupees. Big prizes, lots at stake. Let's go right into the battle and figure out how this is going to work and who is going to be our champion. We'll begin with the first of our rounds after I introduce to you my top 6. Battled it out with a lot of other schoolmates, a lot of other friends. They are here today after multiple rounds at school level and district level. This is the top 6 at Madhya Pradesh. First up, the first one on my right hand side. Here it comes. The first contestant on my right hand side from the School of Excellence 2 from Devas is Aman Kumar Anjana. Best of luck to you and welcome to the quiz. The second one representing Government Excellence Higher Secondary School from Morena is Rajiv Rathore. Best of luck and welcome to the quiz, Rajiv. We will move on with our third of our contestants. Our third contestant today is from Government Excellence Higher Secondary School, Madhavnagar, Ujjain. Our contestant, of course, is Kanishk Jain. Best of luck to you, Kanishk, and I will move on to the first on my left hand side. Abhishek Mishra, who will represent Government Higher Secondary School, Semarias from Siddhi. Best of luck to you and welcome to the show. Moving on to my penultimate contestant here today. Government Martin number 1 Excellence School Rewa, Anuj Mishra. Best of luck to you, Anuj. Moving on to my final contestant, the one who finishes up this line. All the way from Excellence School number 1 Shivpuri is Ayush Tripathi. Best of luck to you, Ayush, and best of luck to all of you. And for all of you who are watching this quiz, I'm sure you're going to have a brilliant ride. All of them, of course, giving answers in a flash and thinking out the answers, because we want them to think outside the box too. For now, let me begin with the first of my rounds. It's called Bite Abundance. Here it comes. ओके इस राउंड का फंडा बहुत सिंपल है. आप सबको मिलेगा 4 स्टेटमेंट्स. उन 4 स्टेटमेंट में से सिर्फ 2 स्टेटमेंट सही होंगे और 2 स्टेटमेंट गलत. आपको आइडेंटिफाई करना है कि उन 4 स्टेटमेंट्स में 2 स्टेटमेंट कौन से हैं. आपको मिलेंगे सिर्फ 2 अपॉर्चुनिटीज, उससे ज्यादा नहीं. सही जवाब दिया तो आपको मिलेगा +100, गलत जवाब दिया तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. कोई डाउट? No doubts? Okay. Everybody is shaking their head. All good? हाँ जी, buzzer नहीं है राजीव. Not now. I will tell you when buzzers come. For now, it's an individual round.
आप सभी को 4-4 स्टेटमेंट अपने आप मिल जाएंगे। उन 4 में से आपको सिर्फ चुनना है 2 सही स्टेटमेंट। सही स्टेटमेंट सही से चुनने के लिए आपको मिलेंगे 100 + 100 200 पॉइंट्स। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऑल गुड? Okay. We will start off with Aman Kumar Anjana from School of Excellence, Devas. You will be the first person taking this, and आपके 4 statement आपकी screen पर। Verizon Communication शुरू हुआ था as Bell Atlantic. Data for Google News is crowdsourced. Pinterest is managed by Cold Brew Labs. और Adobe was initially named as Abracadabra. 4 स्टेटमेंट, इनमें से सिर्फ 2 सही हैं। कौन से हैं वो 2? अमन। सर वेराइजन बेल अटलांटिक। Verizon started as Bell Atlantic. Let's click on that. 100 points to you. Well done. और दूसरा? एडोब। Sorry? सर गूगल। Google वाला। The data for Google News is crowdsourced. Google News crowdsource नहीं करता है. That would have been the wrong answer. The right answer there would have been Pinterest is managed by Cold Brew Labs. वहाँ पे और 100 मिल जाते, but not a bad start. 100 points मिल गया आपको. It's a very very good start. Nice start, Aman. Okay. Aman gets himself 100 points. Nice way to start this finale. Our second participant, Rajiv Rathore from Government Excellence Higher Secondary School, Morena, from Morena. आपका टर्न है। 4 स्टेटमेंट आने वाले हैं आपके स्क्रीन पर। राजीव, आर यू रेडी? Yes, sir. Okay. Symbian S60 was created for Nokia devices. Instagram was acquired by Facebook. Bose was the hardware developer for Asus. iTunes was initially called Breadjam. इन 4 स्टेटमेंट में से सही वाले स्टेटमेंट कौन से हैं? Instagram was acquired by Facebook in 2000. Instagram was acquired by Facebook, आपका चॉइस, और आपको मिलते हैं 100 पॉइंट्स। वेल डन राजीव। एक और स्टेटमेंट, 100 पॉइंट्स और ले लो। Symbian, sir. Symbian S60 कहते हैं राजीव, और चुनते हैं Symbian X60 is also the right answer. Plus 100 also to you. 200 is what you make. It's a very very good start for Rajiv. From Rajiv, I will move on to Kanishk Jain from Government. Okay, next one. Question number 3, and this is to Kanishk Jain. Kanishk Jain, आपका सवाल है आपकी स्क्रीन पर। 4 स्टेटमेंट। Here we go. Cricinfo was owned by Wisden. Rob Janoff designed the Facebook logo. Webby Awards जो हैं is a prize for the best tweet of the year, और Internet Movie Database है full form IMDb का। इन 4 में से 2 स्टेटमेंट सही है। आपका टाइम शुरू होता है अब। हाँ कनिष्क। So Webby Awards is the prize for best tweet. Webby Awards is the prize for best tweet. सही नहीं है। We will go on. You have one more choice. So Rob Janoff designed the Facebook logo. Rob Janoff designed the Facebook logo. दोनों में से दोनों गलत, but that's okay. पहला राउंड है, स्ट्रेस मत लीजिए। सही जवाब वहां पर दोनों थे। Cricinfo is owned by Wisden, और IMDb का फुल फॉर्म था इंटरनेट मूवी डेटाबेस। डोंट वरी एट ऑल कनिष्क, एक ही राउंड था, एक ही सवाल था। डोंट वरी अबाउट इट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और ये है टर्न अभिषेक मिश्रा का, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सेमरिया से, और आपके 4 स्टेटमेंट। Spotify is owned by Microsoft. Picasa was created by a company called Lifescape. A used coffee cup was the first product to be sold on eBay, and Dipendra Goyal was the founder of Zomato. सही जवाब कौन से हैं? Used coffee cup was the first product to be ever sold on eBay. Okay. Ouch, it's not. Next. एक और चॉइस है आपका। Dipender Goyal was the founder of Zomato. Dipendra Goyal was the founder of Zomato is correct. 100 points on that. Well done.
The other one that would have been true there is Picasa was created by a company called Lifescape. जैसे हमने पहले भी कहा है, रूरल IT क्विज पर कुछ नया सीखने के लिए हमेशा मिलता है. Today you learned that Picasa was created by a company called Lifescape. Okay, moving on from Abhishek across to अनुज मिश्रा जो हैं गवर्नमेंट मार्टन नंबर 1 एक्सीलेंस स्कूल रेवा से. आपके 4 स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पर. About.me acquired by AOL 4 days after its public launch. Peter Shu was the founder of Transcend. Buy any Micromax brand and get 40% on Swiggy orders. Pong was a game released in 1972 by Nintendo. Yes sir. कौन से सही जवाब हैं और कौन से स्टेटमेंट सही हैं? Pong was a game released in 1972 by Nintendo. Okay. About.me acquired by AOL. 4 days after its public launch is the right answer. 100 points to you. जहां पे आपने मिस्टेक किया था, Pong was a game released in 1972 by Atari and not Nintendo. Confused हुए आप और सही जवाब वहां पर होता Peter Shu was the founder of Transcend. You still make 100 points. Good job, Anuj. Good start on that. We will go to our last contestant of this round, and that is Ayush Tripathi from Excellent School number 1 Shivpuri. आपके 4 statement. Tekken is a game franchise created, developed and published by Namco. Big Dog and D-Guy are made for NASA. Just Dial was founded by VSS Money, or Me with Elephants was the first video on YouTube. हाँ जी सर. Taken is the first for. Sorry, come again. Sir, first statement. Tekken के बारे में ना? Okay, Tekken try करते हैं. Good answer, 100 points. दूसरा? Sir, Me with Elephants was the first video on YouTube. Me with Elephants was the first video on YouTube is गलत जवाब on that, क्योंकि वो Me with Elephants नहीं था, Me at the Zoo था वो पहला वीडियो. गलत जवाब. और सही जवाब वहां पर होता Just Dial was founded by VSS Money. 4 एपिसोड में है, 4थे एपिसोड में है हम. बट द ब्यूटी इज पहली बार मैंने किसी को देखा हंसते हुए डिस्पाइट गलत आंसर. It's nice to see that, Ayush. I like that enthusiasm and fun. Have fun, learn something new. That's the beauty of it. But for now, I'm going to take a short break. And on the other side, more quizzing and lots more points to be scored. Don't go anywhere. You're watching TCS Rural IT Quiz. I'll be right back. Money has come a long way. From being grains, shells, metal coins, paper, plastic, it has taken many forms and shapes for at least last 3,000 years of human history. But who would have imagined that one day it would become so advanced that it becomes invisible? TCS connected hundreds of banks, financial institutions, and millions of citizens all over India using a secured, resilient, innovative, always-on payment platforms of RTGS, NEFT, and NACH. These advanced financial platforms have now become the digital spine of India's economy, empowering the digital India vision by providing anytime, any amount, anyone to anyone, anywhere, any device, any channel, any bank to any bank transactions. So many any's, making it one of the world's most innovative payments infrastructures. So the next time you get that SMS ping that says your money's in the bank, TCS helped get it there. TCS, part of your story. Welcome back. You're watching TCS Rural IT Quiz Season 21 all the way to Episode 4. Episode 4 is at Madhya Pradesh. 1 round done. It's almost even Stevens on the scoreboard, except for Rajiv, who made it count and scored 200. Everybody else on 100 points. Early days, nothing to worry about. But for now, we will move on to the second of my rounds. It's called Tech Vision, and here it comes. Okay. इस राउंड का फंडा या पॉइंट सिस्टम बहुत आसान है. मैं एक विजुअल दिखाऊंगा, उसके बारे में एक क्वेश्चन पूछूंगा.
बजर पर सही जवाब दिया तो मिलेगा आपको +100, और बजर के सीक्वेंस पर जो 1 2 3 4 होता है उसमें 1 और 2 को अपॉर्चुनिटी मिलेगा इस सवाल के जवाब देने के लिए। अगर आप पहले नंबर पर आए तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा, अगर आप सही जवाब देते हैं तो वहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा और आपको 100 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपको मिलेगा -25, और जो दूसरे सीक्वेंस पर हैं उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगा वही सवाल फिर से जवाब देने के लिए। वहां पर भी पॉइंट सिस्टम रिमेन्स द सेम, +100 -25। कोई डाउट? नो डाउट्स, ओके, लवली। Okay, question number 1, fingers on your buzzer. Question number 1. All you need to tell me इस पहले सवाल में कि कौन सी एंटीवायरस कंपनी जो है जो इनके नाम से जानी जाती है। मैं एक जनाब का फोटोग्राफ दिखाने वाला हूं आपको, उनसे पहचान कर मुझे ये बताइए कि कौन सी एंटीवायरस कंपनी है जिसका नाम इन जनाब से मिलता है। ऑल गुड? हियर वी गो। फेमस मैन राजीव ऑन द बजर। यस राजीव, अनम्यूट कर लो। सॉरी, McAfee. मैकैफी। दिस इज नॉट जॉन मैकैफी। -25। कोई और ट्राई करेगा? कोई नहीं ट्राई करने वाला। थॉट उनके लुक पर इट वॉज वर्केबल। द आंसर इज कैस्पार्स्की। दिस इज the man who is behind Kaspersky. Nobody getting points, or rather Rajiv taking negative on that. दूसरा वाला सवाल आपको ये बताना है कि मैं एक प्रोटोटाइप दिखाने वाला हूं। प्रोटोटाइप का मतलब होता है one of the earliest products, okay? आपको ये बताना है this is a product for what? मुझे एक जेनेरिक आंसर चाहिए, ब्रांड नेम नहीं चाहिए, कंपनी का नाम नहीं चाहिए। ये कौन से प्रोडक्ट का अर्लीस्ट स्टाइल या प्रोटोटाइप था। One request, when you're looking at this question, don't look at it from computer hardware. Think a little about history. हिस्ट्री के एंगल से सोचे ये कौन से प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप था। चलिए देखते हैं। कनिष्क ऑन द बजर इन अ फ्लैश, अनम्यूट कीजिए और जवाब दीजिए। The keyboard. सॉरी, Keyboard. कीबोर्ड। इससे बेहतर आंसर दे सकते हैं? Sir, typewriter. Perfect. Keyboard या typewriter, one of the, this is a prototype for the typewriter or eventually what became the keyboard. +100 to you. Nice answer, Kanishk. +100 is what you get on that. And I will go on to my next question. अगला सवाल जो है, I'm going to show you a Tesla car. ओके लेकिन टेस्ला कार के अंदर वाला पिक्चर दिखाने वाला हूं। यू नीड टू टेल मी व्हाट इज सो स्पेशल और यूनिक अबाउट दिस कार। ओके, जेनरिक का जो होता है, यानी जनरल वाला टेस्ला आंसर नहीं चाहिए मुझे। आई एम नॉट लुकिंग एट इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक कार, वो आंसर नहीं चाहिए। इट्स समथिंग वेरी स्पेसिफिक अबाउट दिस। ओके, हियर वी गो। अभिषेक ऑन द बजर। फर्स्ट अटेम्प्ट अभिषेक को मिलेगा। Self-driving car. सेल्फ ड्राइविंग कार, परफेक्ट। ऑटो पायलट या सेल्फ ड्राइविंग कार, वेरी गुड आंसर अभिषेक। 100 पॉइंट्स टू यू। टेस्ला are trying out something called the autopilot or the self-driving car. This is an example of one of them. Very good answer. The next one is you need to tell me who used to make this operating system. ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जिसका पिक्चर मैं दिखाने वाला हूं वो अभी इस्तेमाल में नहीं है, बहुत ही पुराना है, लेकिन कंप्यूटर के इतिहास से आपको मुझे ये बताना है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम कौन बनाता था, कौन सी कंपनी थी जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती थी। ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम था न्यूटन और ये पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम था, नाम था न्यूटन। ओके राजीव, फिर से आप बजर पर। IBM sir. -25, not IBM. Good try, not IBM, not IBM. कोई और ट्राई करेगा? नाम था न्यूटन, सो इजी है यार। अमन, ओके अमन ऑन द बजर, अनम्यूट कीजिए। सर एप्पल। न्यूटन, एप्पल। अरे यार हंस के तो आंसर दो, इतना सीरियस क्यों बैठा हो वहां पे। गुड आंसर, +100 अमन। अमन
from School of Excellence, Devas, good answer, 100 points. Newton was an operating system made by Apple. Okay, अगला सवाल. Question. This one is pretty simple. लोगो है, इस लोगो को पहचानो और मुझे कंपनी का नाम दो, बस. अनुज ऑन द बजर, अनम्यूट कीजिए और इस लोगो को पहचानिए. HMT. अरे नहीं नहीं नहीं, -25. ओके, कोई और नहीं ट्राई करने वाला. ये लोगो है फॉक्सकॉन का. फॉक्सकॉन जो एप्पल डिफरेंट कंपनीज का हार्डवेयर बनाती है, ये लोगो है फॉक्सकॉन का. Again, another thing you got to learn today at the TCS Rural IT Quiz. Next question, last one on this. आसान सा सवाल है. एक जो मैं आपको अगले स्लाइड पर दिखाने वाला हूं, ये है एक सेफ्टी स्क्रीन बच्चों के लिए जो बनाई है. आपको मुझे ये बताना है कि कौन सी कंपनी है, कौन सी मोबाइल फोन कंपनी है जिन्होंने ये सेफ्टी स्क्रीन बच्चों के लिए तैयार किया है. कलर्स को देखिए, कौन हो सकता है. मशहूर मोबाइल फोन कंपनी है दुनिया में, बहुत ही मशहूर. राजीव, Sir, Samsung. गैस कर रहे हो? Yes, sir. Good guess, Rajiv. Very, very good guess. Plus 100 to you. That is Samsung. That's a good way to end round 2. दो round के बाद we see that sometimes guesswork actually helps. And sometimes, even when you're sure of an answer, it could be an incorrect answer. Such is life. But I will move on to my next of my rounds. This round is going to be more fun because there's a lot of clues that come up on screen. We will move into Tech Clouds. Here it comes. Okay, clouds are ones that will carry the jumbled word. ये जो राउंड है jumbled word राउंड है. आपको एक स्क्रीन पर एक क्लू मिलेगा, उसके नीचे आंसर जो है jumbled word फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे. आपको सिर्फ क्लू पढ़ना है और अनजम्बल करके मुझे आंसर बताना है. बहुत ही आसान है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. प्लस 100, -25, हर सवाल पर 2 चांस मिल सकते हैं. ओके, एनी डाउट्स? सॉरी, बजर राउंड है, बजर राउंड है. बजर पर 2 अटेम्प्ट्स, पहले अटेम्प्ट और दूसरे अटेम्प्ट पर 100, प्लस 100, प्लस 100, -25, -25. क्लू आएगा स्क्रीन पर, उसके नीचे यू विल गेट जम्बल्ड वर्ड फॉर्मेट में आंसर भी होगा आपको मदद करने के लिए. क्लू पढ़ लो, जम्बल्ड वर्ड देख लो एंड ट्राई एंड आंसर द क्वेश्चन. ऑल गुड? Yes, sir. Okay, lovely. Let's move on. Question number 1. Best of luck. Here it comes. Touted as the most secure messaging app and created by Open Whisper Systems. इस ऐप का नाम क्या है? जम्बल्ड वर्ड जो है आपकी स्क्रीन पर भी है. कोई ट्राई करेगा? प्लस 100, -25. Aman on the buzzer. Go for it, Aman. आपका टर्न. Signal. Sorry? Signal. Signal, the app, touted as the most secure messaging app. Plus 100 to you, Aman. Nicely done. That takes you to a total of 300 points, which is just 50 points away from Rajiv. You have a lead. Maintain your lead, and Rajiv, you have to catch up with him. Okay, let's go on to my next question. Developed under the direction of US Advanced Research Project Agency. Aman again. Go for it, Aman. Sir, ARPANET. Sorry? Quick, Aman. ARPANET. Sorry? ARPANET. ARPANET. अमन, आपका माइक जो है जरा आपके नजदीक ले आना प्लीज. आंसर करने के टाइम पर सुनाई नहीं दे रहा है. ARPANET is a good answer. Plus 100 to you. Okay, moving on to the next one.
It is an interactive experience of a real world environment where the objects that resides in the real world are enhanced by computer generated perception information. Aman again. Go for it, Aman. Sir, augmented reality. वेल डन, वेल डन। मेरे सवाल पढ़ने से पहले ही आपने आंसर दे दिया। वेरी वेल डन। टेक्स यू टू 500 विच इज अ वेरी वेरी गुड स्कोर। और आप पांचों को मैं फिर से ये बता दूं कि 500 पॉइंट्स के साथ अमन अभी लीड पर है। यू नीड टू कैच अप विथ हिम, यू कांट लेट हिम रन अवे। ओके अमन, आपके लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि डोंट स्टॉप, कीप स्कोरिंग। ओके, लेट्स गो नेक्स्ट वन। Game series created by Ed Boon and John Tobias. +100, -25. Ed Boon और John Tobias ने एक Aman again. Go for it, Aman. Sir, Mortal Kombat. Well done again. Well done. एक और 100 points to you, Aman, taking your score to 600. While you're watching this at home, I'm sure you know how people are faring, but I will take a short break, and on the other side of the break, 2 more rounds to go. Will Aman continue this domination to be the state champion, or is there someone else who can stop this reign? We'll be right back, but after this. There's a race underway that is like no other race the world has seen. It is a race to find a cure for a pandemic. A vaccine that will save lives. The faster you find it, the more lives you save. The entire scientific and pharmaceutical world is chasing a cure. And TCS is right there with them. TCS Research and Innovation Division leveraged artificial intelligence to help identify 31 molecules that potentially hold the key to a drug design for the virus. TCS has co-innovated with the global pharmaceutical, life sciences, and healthcare world. Be it in genomics, remote patient monitoring, medical device engineering, or personalized 3D implants. In the fight against the pandemic, TCS is leading drug discovery, regulatory compliance, and pharmacovigilance efforts. With technology helping medicine, the finish line to the cure cannot be far away. TCS, part of your story. Welcome back. You're watching TCS Rural IT Quiz episode 4 of season 21, all the way from Madhya Pradesh. If you've been watching this, you know for a fact that Aman has taken a big lead. It's about time that others wake up and catch up to him. Or is Aman going to be the third person of the 1,000 points club for this season? There are already 2 people who have made sure they've entered that club. Aman, it's your turn now. You have just 400 more points that you need to get into the 1,000 point club. But for the rest of you, don't stop. Don't let him get away. Start scoring. Okay? वैसे बैठकर अगर अमन को cheering करेंगे आप तो point ही नहीं है. You need to start scoring also. All 5 of you. Best of luck. We'll move into my next round. Here it requires you to have an agile mind. We need you to think outside the box. और ये जो 4 सवाल आने वाले हैं, it's outside the box thinking वाले lateral सवाल हैं. Let's get into this round. It's called Tech Agile. Okay, the funda of this round is very simple. आपको मिलेंगे 3 विजुअल, तीनों को मिला के मुझे एक फाइनल आंसर चाहिए. आंसर हो सकता है ब्रांड, कंपनी, इवेंट या हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कुछ भी हो सकता है फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. सही जवाब देंगे तो आपको मिलेगा +100, गलत जवाब देंगे तो आपको मिलेंगे -25. हर सवाल के 2 अटेम्प्ट होंगे जैसे हम खेलते आ रहे हैं. कोई डाउट? बजर का राउंड है ये. +100, -25, 2 attempts per question. Question number 1. Here we go. Gone buzz. Aman again. Go for it, Aman. Sir, is it Amazon? पूछना जो है मेरा काम है, जवाब देना जो है आपका काम है. तो आप मुझसे पूछ रहे हो कि जवाब दे रहे हो? सर, जवाब दे रहे. तो जवाब क्या है आपका? Amazon. +100 to you. +100 to you, Aman. Very, very well done. I will clear the buzzers out and move on to my next question. दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर आने वाला है. हाँ,
ये तीनों राजीव दिस टाइम फास्टर. यस राजीव. Wikipedia, sir. एक्सप्लेन करो क्यों. Sir, he is the founder of Wikipedia. एंड Sir, I think this is the old name of Wikipedia, Newpedia. एंड बूमिस. दो से ही कर दिया. They actually supported in the creation of Wikipedia, but that's all that I'm looking for. Wikipedia as the answer. Plus 100 to you. Very, very well done. Beautifully answered on that one. We will move on to the next one. तीसरा सवाल है, आसान सा फन सा सवाल है. सभी ट्राई करना है इस बजर पर क्योंकि this is not a tough question. Here we go. Anuj, finally Anuj, come on. What's the answer? Oppo. Sorry? Oppo. Plus 100. Plus 100 to you. Oppo is the right answer. Get Closer जो है उनका innovation seminar है. Oppo Enco is the wireless headphones from Oppo, and Reno of course is a brand from Oppo. 100 points to you. Anuj, good answer. And I will go on to my last question of this round. Be careful. Be careful of this question. मुझे एक प्रोडक्ट या ब्रांड का नाम चाहिए, ओके? और कंपनी, सब it's all the same name, okay? Here we go. आहा, पहला सवाल जहां कोई बजर पर नहीं जा रहा है. That's nice to see. Yes, no, no, yes. Okay, no buzzers. Let me give you the answer to this one. शायद टफ था इस राउंड के 4 सवालों में. ये सवाल जो था जरा सा टफ था. The answer on this is Zoho. Z-O-H-O. Zoho is the answer. Zoho Desk और Zoho Reader का रिक्रूटर का लोगो है और श्रीधर वेम्बू जो हैं Zoho के फाउंडर हैं. The answer is Zoho. That brings us to an end of our 4th round. I've got one more round to go. और ये राउंड जो है डिसाइड करेगा कि मध्य प्रदेश स्टेट के चैंपियन कौन होंगे. But before that, let me quickly take a look at how the scores stand. Aman, all the way from School for Excellence from Devas, leading this quiz with 700 points. Very, very good, Aman. Rajiv from Government Higher Secondary School, Morena on 350. Kanishk, Government Higher Secondary School, Madhav Nagar on 100 points. Abhishek Verma from Government Higher Secondary School, Semaria on 200 points. Anuj Mishra, Government Martin number 1 Excellent School from Reva on 175 points. And finally, Ayush Tripathi, Government Excellent School number 1 Shivpuri से हैं और उनको मिलता है 100 points. Okay, everybody knows what your score is. Everybody knows how much you need. For example, Rajiv, आपको 450, at least 400 points चाहिए और इस आखिरी वाले राउंड पे what we have is 450 points. So ये क्विज जो है अभी खत्म नहीं हुआ है. राजीव, अभी भी आप जीत सकते हो अगर you get all 3 of them right. Okay? Let's start off with my last round. It's called Tech Ecosystems, and here it comes. Okay. Everywhere there are ecosystems, and these ecosystems are what generate great products. Similarly, most organizations, most people, most brands have their own unique ecosystem. What we have done in this round, taken parts of the ecosystem and displayed it as clues. You will get 2 separate clues in this round, okay? पहले वाले clue पर, and both the clues lead you to the same answer. दोनों के जवाब जो हैं एक ही रहेगा. तो पहले क्लू पर अगर आप बजर पर सही जवाब देते हैं आपको मिलता है 150 पॉइंट्स. गलत जवाब दिया तो आपको मिलेगा -25. दूसरे क्लू पर पॉइंट्स होगा +100 -25. ओके, हर क्लू पर सिर्फ एक इंडिविजुअल को चांस मिलेगा आंसर ट्राई करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले क्लू पर लेट्स से अभिषेक बजर प्रेस करते हैं और सही जवाब देते हैं, उनको मिल जाता है 150 उनके टोटल पर. लेकिन अगर वो गलत जवाब देंगे तो आई विल गिव यू -25. देन आई विल शो द नेक्स्ट क्लू. वहां पर 5 लोग जो हैं जिन्होंने ट्राई नहीं किया है उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है 100 पॉइंट के लिए दूसरा क्लू अटेम्प्ट करने के लिए. ओके,
बट अगर पहले क्लू दिखाने के बाद जैसे मैंने बोला अभिषेक ने गलत जवाब दिया, बट बिफोर आई गो टू द सेकेंड क्लू अगर कोई और बजर प्रेस करना चाहता है यू कैन, बट मैं आपको सेकेंड क्लू नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आप मुझसे पहले बजर दबाए हैं। हाँ कनिष्क, आंसर क्या है? काम कर रहा है आपका बजर, काम कर रहा है, डोंट वरी। यू जस्ट नीड टू वेट फॉर मी टू गो टू द सेकेंड क्लू। अगर आपने वेट नहीं किया तो मैं सिर्फ आपको पहला क्लू दिखाऊंगा, वहीं पर आपको मुझे आंसर देना होगा। बट यू विल बी प्लेइंग फॉर 100 पॉइंट्स, नॉट 150 पॉइंट्स। ऑल गुड? एनी डाउट्स? ओके, बेस्ट ऑफ लक। Question number 1, clue number 1. Here we go. Elements family. Okay, where are you? Who's gone on the buzzer? Kanishk Jain from Government Excellence Higher Secondary School, Madhav Nagar. आपका buzzer बोलिए। Sir, Adobe. ये Elements family क्या होता है? That means mobile apps. They are both new offerings from Adobe and into the Elements family, which has got a huge response actually. But you will get 150 points. Very, very well done, Karish. 150 points is what you get on this answer on the first clue itself. That is lovely. We will move on to my second question. यहाँ पे कौन buzzer पर जाएगा? क्योंकि currently Kanishk is on 250. Aman 700, Rajiv 350, Abhishek on 200, Anuj on 175 and Ayush on 100 points. Technically Aman, आपको कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आप जीत चुके हैं। कोई और आपसे कैचअप नहीं कर सकता है। दैट इज सम आउटस्टैंडिंग आंसर एंड सम आउटस्टैंडिंग क्विजिंग। लेकिन 2 और सवाल हैं। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू स्टिल ट्राई, डोंट स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम ट्राइंग। आई विल गो टू माई नेक्स्ट क्लू, रादर next question, first clue on your screen. Welcome to Animal Crossing Pocket Camp Club. कौन सी गेमिंग कंपनी है जो आप इनसे जोड़ेंगे? It's one of the biggest gaming companies in the world. बहुत ही मशहूर है अपने गेम्स के लिए। राजीव, come on Rajiv, what's the answer? I think Nintendo. You think? Are you not sure? Sure, sir. Plus 150, Rajiv. Plus 150. Good answer on this. This is Nintendo. That takes you to 500, which is very, very close. And we will take a look at the last question of this round. Pehla clue. Where? Aman. Okay, finally Aman decided that he needs to still try. Bully Aman. सर गूगल। मेरा दूसरा क्लू क्या हो सकता है? सर फिटबिट। अरे वाह, नॉट बैड। इट्स नॉट फिटबिट। आंसर है गूगल। मेरा दूसरा क्लू था गूगल असिस्टेंट का लोगो, बट द आंसर इज गूगल। Very, very well done. That's another 150 points to you, and that takes you all the way to 850. You just missed joining the 1000 points club. There are only 2 young men as of this season who have joined the 1000 points club. Aman just missing out. But ladies and gentlemen, Aman Kumar Anjana, of course, qualifying for the national finale where he will represent his state and his school. Congratulations to all of you. Thank you so much for being a part of another episode of the TCS Rural IT Quiz 2020. I'm Lloyd Saldana signing off. I'll see you in the next episode. Till then, take care. नमस्कार। कर्नाटक राज्य के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा टाटा कंसल्टेंसी सर्विस द्वारा वर्ष 2013 से नेशनल रूरल आईटी क्विज का आयोजन प्रतिवर्ष किया जा रहा है। यह अत्यंत सराहनीय कदम है क्योंकि इस प्रतियोगिता के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को टेक्निकल एजुकेशन और आईटी के क्षेत्र में कुछ समझने और आगे आने का मौका मिलता है। इस वर्ष जो प्रतियोगिता आयोजित हुई है, इसमें मध्य प्रदेश की कक्षा 8 से 12 के 7454 प्रतिभागियों ने भाग लिया है। ये मध्य प्रदेश को देखते हुए एक बड़ी संख्या है।
ये दर्शा रहा है कि मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों में आईटी के प्रति रुझान बढ़ रहा है और वो ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए उत्साहित हैं और तत्पर हैं। जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता नवंबर में होने वाली है उसके लिए 2 प्रतिभागियों का चयन मध्य प्रदेश से हुआ है। उनमें से एक देवास जिले के हैं और दूसरे मुरैना जिले के। हम सभी जो नेशनल रूरल आईटी क्विज में बच्चे भाग ले रहे हैं उनके लिए अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए हम पुनः कर्नाटक सरकार और टाटा कंसल्टेंसी की सराहना करते हुए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।